Okay, so today we will discuss a couple of new concepts in using, the gates that we studied last time, and also hopefully that from today you will be able to see some applications of the mathematics that we have been developing so far. So today we will discuss what is called dense coding and teleportation. And if there is time, we'll also see entanglement in mixed state. We already know what do we mean by entanglement, pure entangled state, but we will see uh, how we can see if a mixed state has entanglement in it or not. And actually, the next week is, let me just give some hint. We will spend the whole week on entanglement. Why it is so important, and especially Einstein's argument against some missing things in quantum mechanics, and how Bell and other people's thoughts came to show that there's perhaps not much wrong. So the next week would be much more about entanglement. So this lecture is essentially going to be using entanglement for doing a few useful things. So I wanted to show you the sort of some importance of entanglement before we discuss it in detail. So the next week would be much more about Einstein, Podolsky, and Rosen's argument called EPR argument, and also Bell inequalities. And we will have more applications and try to clear the air around entanglement, that why it is so important, and its role in quantum mechanics, and especially in quantum information and computing. Okay, so today let's discuss two applications of entanglement in dense coding and teleportation. And we will also see how we can work out if entanglement is present in mixed states or not. But before that, let me just recall what we did last time. In the last lecture, we saw that if we have a state that begins, let's say, in a product state XY, and we perform a header mod on one of the states, and then controlled by this, we perform an X gate on the other qubit, then we can get an entangled state over here. It's actually maximally entangled state. So not all states can be maximally entangled. Okay, and unfortunately, this idea of quantification of entanglement, we will have to postpone it at least by 5 to 6 weeks until we understand how to work out the distances between two quantum states. So then we will be able to see how we can quantify the amount of entanglement present in a given state. For now, you can just take me for my words that these states that we get here, which we have been calling Bell states, that are maximally entangled states. But we will get to have the definition of sort of the quantification of entanglement later on. So we saw that if we start in a 0-0 state, so this is a product state, which means it is not an entangled state. If this is at the input, the output state, let's call it beta 00, it's this state 0011. And if we start in 01 state, we come to another Bell state, which we call beta 01. And let me see the notes, not to write in reverse manner.
So this is a state 0, 1 plus 1, 0. And if we start in 1, 0 product state, we can go to another belt state, which is an maximally entangled state. This is 0, 0 minus 1, 1. And if we start in 1, 1 state, we go to another entangled state, 0, 1 minus 1, 0. And if we have, let's say, some 2-qubit state, and we want to measure it in bell basis, we know that we can invert this circuit before measuring in computational basis state, and then measure. Then we can find, okay, what are the projections of this state along 4 of these bell states. Okay, so let's now discuss one protocol that actually I will discuss 3 protocols today. So the simplest one before this is what we call entanglement distribution. So this means that, let's say we have 2 parties, let's call them Alice and Bob, and they are 2 separate parties. Okay, they may be located just next to each other, or they might be, thousands of miles away. Usually, when we are talking about a quantum computer and on the same quantum processor, they may be, lying next to each other. But when we are thinking about communication, they may be lying several miles away from each other. And then there is third party, let's call it Charlie. So suppose Charlie starts from 2 qubits. Those 2 qubits might be 2 photons, or these 2 qubits might be 2 ions with some 2 states, and they may be in a given cavity, or they might be 2 superconducting resonators on some superconducting quantum computer chip, or whatever they are. So he might start from a product state, let's say from 0, 0, or maybe 1, 1, or 1, any of these 4 states, and he prepares the 2 particles in an entangled state. Remember, the state is entangled, but the particles or qubits, they are separate physical entities. This is something you have to remember. So they are jointly present in a given state. For example, you might, prepare an atom in such a way that it emits 2 photons, and those 2 photons are entangled with each other. They are in a joint state, and maybe one is moving this way and the other is moving that way. Or you can conduct this experiment on 2 ions, or maybe 2 qubits on this chamber, and then you assign 1 physical qubit to this party, suppose the first one, another physical qubit to this party. And this process is called entanglement distribution. And the qubit that is held by each one of them is sometimes also called E bit. This is a single qubit, but it's entangled with another qubit somewhere else. So this E bit, we call it a resource as well, because later we'll see that we can use these E bits to do some useful thing. Okay. So this protocol is called entanglement distribution. Easy. Okay, so let's discuss the second application.
It's called dense coding. Now, suppose Alice wants to communicate with Bob some information. There are, many possible ways. One is, you use a classical channel. If you have some bits, you can just send to Bob. But let's see if we can uh, uh, get some advantage if we use quantum bits or qubits for communication of information. And suppose Alice has two classical bits of information. So it means Alice might have 00 or 01 or 10 or 11 with her that she wants to communicate to Bob. Now, classically, you need to send two bits. But let's see if we can get some advantage if we use this E bit that is in possession of Alice. So suppose Alice has one of this qubit in the beta 00 state. So then let's say if Alice wants to communicate 00, she doesn't do anything and just send this E bit to Bob. And so Bob gets this. So this is a single qubit, remember. And if she wants to communicate 01, so let's say Alice does X operation on her qubit. She only has one qubit, okay? So I don't need to specify two operations. Let's say tensor, one qubit, and other operator. So, and if she wants to, send 10, she performs a Y gate. And if she wants to send 11, she performs a Z gate. And the protocol is this, that once Bob receives the qubit from Alice, he just measures his already possessed qubit and the qubit received from from Alice in Bell basis. So Bob's protocol is simple, that he has his own E bit. So Bob E bit, and he receives something from Alice qubit. And then the protocol is that he performs a measurement in Bell basis. And let's see what are the possible outcomes. So for that, let's see what this I, X, Y, and Z do to this beta 00 state. Now, if I perform an identity operation on Alice qubit, the first one, and of course, we are not doing anything to Bob's qubit. So if we perform identity on both qubits, we will still get the same state, right? Now, let's see what happens if I perform X on Alice qubit, because Alice is going to perform X. And then we are not going to do anything to Bob's qubit because Bob is holding on to his qubit on this beta 00 state. So what we will get. So on this state, I want to perform X here and do nothing over here. So X on 0 will give me 1, and X and 1 will give me 0. So then it means this becomes this state. So this becomes beta 01 state. Now, if Alice performs Y on her qubit and nothing on Bob's qubit, what do we get? If I perform Y here and Y here, so Y on 0 will make it iota 1, and Y on 1 will make it minus iota 0. So I can take iota common. So I get 1 0 minus 0 1. So it is this state with minus sign taken out. So I get minus iota
beta 1 1, and if we perform Z gate on the first qubit, this becomes 1, and this become 0. Sorry, no. So Z gate is Z0 is 0, and Z1 is minus this one. So then this becomes this state, beta 1 0. So Z gate on Alice qubit and nothing to Bob's qubit will turn this beta 00 state to beta 1 0. Right? Beta 1 0. Okay, perfect. Now it means that when Bob receives the qubit from Alice and he measures in the Bell basis what he's going to get. If Alice didn't do anything to her qubit, he will get beta 00 state here, and in Bell basis measurement, he will measure 00. And if Alice did X to her qubit, then he's getting beta 01 state here. And this means that when he measures in Bell basis, he gets 01 over here. So the same 01 is over there. And here it means, let me change the protocol, okay? Let's make this Z. Let's make this Y. This would be a bit easier. So if she wants to send 1 0, so she performs Z, which means this will turn her state to beta 1 0. And when he measures in Bell basis, he will get 1 0. And similarly for 1 1. So it means by sending a single qubit to Bob, she's able to communicate 2 bits of information, 2 classical bits of information. That's why it's called dense coding, because it's denser than the classical communication protocol. You can communicate 2 classical bits by sending only 1 quantum bit. But there are, several caveats. So I'll talk about them, but let me ask if there is any question or confusion about this procedure. Mm-hmm. नहीं ऐसा नहीं, मैं एंड पे थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो नहीं है. पहले तो शुरू करते हैं हमारा मकसद क्या है. हमारा मकसद ये है कि हम 2 क्लासिकल बिट्स बॉब को भेजना चाहते हैं. परफेक्ट. अब अगर क्लासिकली भेजेंगे तो 2 बिट्स भेजनी पड़ेंगी इन जनरल. देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, क्योंकि आपके पास 2 बिट्स का मतलब है 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, और अगर आपने चारों कम्युनिकेट करनी तो 2 बिट्स को भेजनी पड़ेगी. अब लेट्स सी के क्या कोई हम ऐसा क्वांटम मैकेनिकली प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं कि हम एक क्यूबिट भेजकर वो जो चारों स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो कन्वे कर सकें. तो आंसर है यस. अब उसका प्रोटोकॉल मैं बताता हूँ. प्रोटोकॉल ये है कि पहले तो ये है कि एलिस के पास और बॉब के पास ऑलरेडी शेयर्ड एंटेंगल स्टेट्स हैं. समहाउ लेट्स से कि 10 साल पहले एलिस और बॉब जो हैं वो उन्होंने प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया था, and then they had 2 communication boxes with them. Let's see how the protocol works. So Alice has her box and Bob has her box, and suppose now Bob goes off on a long journey to space or somewhere else, but before they do, they this is third person, or even if it is Bob or Alice, they can do it themselves or whatever. They prepared several entangled states, and Alice keeps half of them and Bob keeps the other half of them. Okay, but they also have to keep track, okay, that this qubit is entangled with this one and this is entangled with that one, etc. Then Bob goes away, and maybe 100 years later or 10 years later, Alice wants to communicate some information to Bob. Then what she can do, she can pick one of her entangled bit and perform one of these 4 operations, depending on कि वो क्या भेजना चाहती है.
क्या वो अगर वो 0-1 कम्युनिकेट करना चाहती है, फर्ज करें ये चारों जो हैं उन्होंने कोई मैसेज रखे हुए हैं, आप बल्कि 000110 इनको ही भूल, फर्ज करें कि एलिस ने 4 पॉसिबल मैसेज भेजने हैं, बाप को ये तो कहना है कि वापस आ जाओ, या बाप को कहना है कीप गोइंग, या मे बी बाप को कहना है कि स्टॉप देयर, सम अदर शिप इज कमिंग, देयर आर 4 मैसेजेस, सो व्हिच मीन देयर आर 4 स्टेट्स दैट शी वांट्स टू कन्वे। तो दे सो उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है बॉब ने कि जब जो भी आप ई बिट मुझे भेजोगी, क्यूबिट भेजोगी, मैं उसको इसके साथ बेल बेसिस में मेजर करूंगा। ओके, सो एंड फ्रॉम दैट ही विल नो कि इन चारों में से कौन सा मैसेज उसने कन्वे किया, एंड शी हैज डिसाइडेड कि अगर मैंने 0-0 करना है तो आई ऑपरेशन करूंगी, 0-1 के लिए ये, एंड इसकी तरह से ऑपरेशन करूंगी। सो विद दिस वे she can communicate her 2 classical bits by sending only 1 quantum bit. Okay, so now any Zara आपको समझ आ गई? हाँ, सविता हंस रही है कि हम दोनों बैठ गए हैं। क्यों Zara, you get what we are saying? कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है? Okay, so the Alice wants to communicate 2 classical bits. So 2 classical bits can be in one of 4 states. So she and Bob already has a protocol set up that when whatever Alice sends, Bob is going to combine both qubits, his qubits and her qubits, and perform measurement in bell basis. क्योंकि आप last class में नहीं थी तो you might not be totally aware. So let's say the bell basis measurement is this, that measurement can distinguish which bell state that 2 qubits are. Okay, जो 4 possible states हैं उनमें से वो measurement है वो distinguish कर लेती है. So then Bob measures both qubits together and he's able to find out कि कौन सा मैसेज है, कौन सी 2 क्लासिकल बिट्स मुझे भेजी गई हैं, because after measurement in bell basis he's able to figure out okay if the output is 0001110 or 11. Okay, so Sabita आपकी कोई क्वेश्चन? जी उसामा। जो इंफॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी एक टू डायमेंशनल सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही होती है ना, यानी क्लासिकली तो वो एक पॉइंट होता है जबकि क्यूबिक में तो एक सरफेस पहले ही इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें एंटेंगलमेंट और सब के बगैर भी तो वो जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वैसे टू डायमेंशनल है, तो हम सिर्फ एक क्यूबिक ही सेंड करते हैं उसी को मेजर करके, बल्कि अगर इसको मैं डिस्क्रीट ना भी करूं तो 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन पॉइंट्स भी तुम्हें सेंड कर सकते हो, पूरा टू डायमेंशनल ब्लॉक्स पे इंफॉर्मेशन कंटेंट में सेंड कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। सो दिस इज अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन कि जो क्यूबिट और क्लासिकल बिट में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये कि क्लासिकल बिट की 2 ही पॉसिबल स्टेट है जबकि क्यूबिट की इन्फिनिट पॉसिबल स्टेट्स हैं। सो व्हाई कैंट वी जस्ट यूज अ सिंगल क्यूबिट टू सेंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन? क्यों? क्योंकि हम जो ब्लॉक स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट को एक जो है ना वो स्टेट असाइन कर सकते हैं। लेट्स से 0000 इज द 0 state and 0001 is just nearby and then the other one and so on. Okay, everybody gets this point? Let's see why we can do it. मैं आपको सिंगल क्यूबिट भेजता हूं, हाउ द हेल विल यू नो कि उसकी क्या स्टेट है? मेजरमेंट करेंगे इट्स आइदर 0 और 1। नहीं, मैंने एक ही आपको क्यूबिट भेजी, सिर्फ एक क्यूबिट, यू गॉट 1 क्यूबिट इन अ सुपरपोजिशन स्टेट। अब कैसे पता चलाएंगे कि उसकी क्या स्टेट है? आपको या 0 मिलना या 1 मिलना, दैट्स इट। अनलेस कि आप मुझे कहें कि आप मुझे थोड़ी सी और स्टेट्स भेज दें वही वाली, ताकि मैं उसको सबको बार बार मेजर करूंगा तो कभी 0 कभी 1 मिलेगा, तो फ्रॉम दैट आई विल बी एबल, बट देन द पॉइंट इज डिफीटेड। ठीक है, सो यू एंड अप एट द सेम पॉइंट, सो जस्ट दैट एनकोडिंग डजंट वर्क। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा, अब ये जो हमने किया है ना, इसमें मैं इस पर थोड़ा डिस्कस इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये चीजें हैं कि जहां पे जो मिस्टीरियस नेचर है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, वो सामने आना शुरू होती है।
अब इसको डेंस कोडिंग का सच्ची बात है आपको पढ़ाने का मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है, क्योंकि विद क्वांटम सिस्टम वी कैन डू a bit faster communication in terms of qubit rate. There is something else, क्योंकि आप इस पे बड़ा सीधा सा एतराज कर सकते हैं जी। आप कहते हैं कि एक क्यूबिट से दो क्लासिकल बिट्स भेज रहे हैं, लेकिन पहले ही एक क्यूबिट तो आपने भेजी हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स रियली 2 क्यूबिट्स, ठीक है। अब लेकिन उसकी भी दूसरी आर्गुमेंट ये है कि जब मैंने जो इंफॉर्मेशन भेजनी है उस वक्त तो मैंने एक ही क्यूबिट भेजी है। जो पहले वाली क्यूबिट है, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ पार्ट ऑफ एज द हार्डवेयर और सेटअप और व्हाटएवर, पार्ट ऑफ मशीन। कोई भी कम्युनिकेशन आपने करनी है तो यू हैव अ सेंडर एंड रिसीवर, सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ your sender and receiver to have infinite number of e-bits already in them. Okay, so that's one counter argument to that. And another reason for me to discuss this dense coding is actually totally different, और वो ये है कि if you realize जो क्यूबिट हम भेज रहे हैं उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल बिट। अगर कोई बंदा उसको रास्ते में पकड़ लेता है या बाप अकेला ही उसी सिंगल क्यूबिट से इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, he'll know nothing। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्यूबिट जा रही है इट इज स्टिल इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 0 and 1, जो सिंगल क्यूबिट जा रही है। अगर आप ये जो चारों स्टेट्स है ना, क्योंकि जो एलिस भेज रही है, एलिस इज आइदर सेंडिंग बीटा 00 or beta 01 or one qubit of all of these states। और अगर आप एलएस की क्यूबिट की स्टेट देखना चाहते हैं तो आप इन चारों का बाद की क्यूबिट पे पार्शियल ट्रेस कर लें, सो यू विल गेट द डेंसिटी ऑपरेटर फॉर एलएस क्यूबिट which would be the trace over the total density operator of both qubits. So this you will see is actually something like this. You either have 0 plus or 0 minus state, which mean कि रास्ते में इसको पकड़ के आप मेजर करेंगे, so there is equal probability of you getting 0 or 1. Okay, so sorry ये मैंने रो ए लिख दिया, बेसिकली ये स्टेट नहीं बल्कि कुछ यूं करके होगा। Okay, so 0 and 1 दोनों की probability half है। So जो peculiar thing इस चीज के बारे में वो ये है कि there is no information in individual qubit। ना तो एलिस की क्यूबिट में कोई इंफॉर्मेशन है, ना बाप की क्यूबिट में कोई इंफॉर्मेशन है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कोरिलेशन बिटवीन द टू क्यूबिट। एंड इस केस में चूंकि द कोरिलेशन इज वेरी स्ट्रांग, वी कैन कॉल इट एंटेंगलमेंट। सो जो इंफॉर्मेशन है इट इज नाइदर स्टोर्ड इन दिस और दैट क्यूबिट, but it is stored in the correlation between the two or entanglement between the two. That is a more striking, thing about this communication protocol than just sending classical bits. This is one thing actually over which a whole secure communication, quantum communication protocols are based, where we exploit these kinds of things. That information is not stored in individual qubits. You can just think of those two photons. Maybe जो बाप के पास ईबिट है वो आपने 10 मिनट पहले भेजी है by a photon, and then the second EBIT you are sending 10 minutes later. So if somebody is trying to capture information in the wave, they will have to exactly capture the photon 10 minutes before and 10 minutes now to be able to find out any information that is being transmitted. So this security is actually a much better or much more peculiar thing about this thing. जी एक तो मतलब क्लासिकली तो ऐसा कुछ आजकल कर रहे हैं ना, जिस तरह जो प्राइवेट की है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनएफटीज वगैरह में, तो हम वो भी यही तरह मतलब इसी तरह की पावर को यूज कर रहे हैं हम। मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट क्वांटम, उस पे भी हम जो कीज है वो डिस्ट्रीब्यूट की होती है, और जब तक वो सब सारे आपस में मिलना जाए और मुतफिक ना हो जाए एक स्पेसिफिक प्राइवेट की पे, तब तक वो मैसेज वो अनकवर नहीं होता। वो भी तो हम विदाउट एनी यूज ऑफ क्वांटम पावर हार्नेस के बगैर कर रहे हैं।
It's sort of similar. It's called classical correlation. So we'll see in the next week that jo correlation between the data can exist classically and quantum mechanically. But quantum mechanically, we can have even stronger correlation than classical correlation. So अगर आप यही काम entangled qubits के साथ करेंगे, you will have a better security than with this blockchain technology. और दूसरी Okay. चीज जो सिंगल क्यूबिट में भेजेंगे एबीट में भेजेंगे इसको भी तो किसी आईओसी या किसी हैंडशेक प्रोटोकॉल वगैरह के साथ ही भेजेंगे ना वरना तो मोस्ट प्रैक्टिकली मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी दूसरे इंग्रेडिएंट ठीक है। मल्टीपल बिट्स की हमें भेजनी पड़ेगी हाँ, लेकिन आप देखें बात की है कि आप जो इंडिविजुअल क्यूबिट्स भेजेंगे वो भी किसी तरीके से भेजेंगे ना। पॉइंट ये है कि अगर आपकी इंडिविजुअल क्यूबिट्स पकड़ी भी जाती हैं तो यू डोंट लूज एनी इंफॉर्मेशन टू द एनिमी because the information is not stored in individual qubits. Information is stored in the correlations between those qubits. And that correlation we will see next week is actually stronger than classical correlation. Okay. So देखिए अगर तो आप ये कह रहे हैं कि बॉब ही एनिमी है, then of course everything is gone. Okay, so let's discuss the second protocol today, which is the teleportation. Sometimes people qualify the word teleportation with the quantum, because teleportation can just mean porting something far away. In quantum, teleportation means porting quantum state far away. Okay, so quantum teleportation means that the objective is that I have, let's say, a single qubit and I have it in a state psi. I want to teleport this state to someplace else. Okay, so this might be someplace A and this might be someplace B. So we are going to discuss the protocol for this thing. So this is the problem. And that someplace else could be miles away, or this someplace else could be just few micrometer away, because as I discussed in the last lecture on quantum computer, we usually have like qubits. They may be individual ions in a trapped ion setup, or individual atoms in a trapped atom setup, or maybe they are some resonating circuit on a quantum computer. So sometime we need to transport the state of this qubit, let's say, to this qubit, because I might want to perform, let's say, a control Z gate between this state and this state, but hardware doesn't allow because there's either no connection or there are hardware limitation that there's no way that I can do a control Z gate between this and this. But I can do control Z gate, let's say, between this and this qubit. So before that, I want to transport this state to another qubit on a quantum computer. Or you can think about a quantum memory. So in quantum memory, your goal is to store qubit states in your memory, but sometime you want to shift the states from here to someplace else because you want to clear some place, or maybe there is protocol that requires you to move states from this place to other places. So in quantum memory or a quantum computer or in quantum communication, this teleportation is a fundamental sort of requirement. And by the way, on quantum computers, this is now routinely done. It's not something that is just in the textbook. So let's see how we can develop a protocol like this. So next week, I'll prove a theorem which is called no cloning theorem, which says that I cannot copy quantum state without destroying it. Actually, without disturbing it is better words. So without disturbing the state, I cannot copy it at someplace else. So that forbids us, from keeping a replica of state here and then putting the same state over there. So we cannot measure the state, because if we measure it, we'll destroy it. So we have to come up with a way of teleporting the quantum state of this thing to someplace else
without measuring it. That's the important point. Because if I measure the state even once, this superposition state will go to either 0 or 1, and I will have no way of recovering the state back. So we have to think of a way of transporting the state of the qubit without measuring it. Okay, get the point? All right, so I'm going to give you a circuit. Actually, let's do it other way. Suppose I have 3 qubits. Let me call it qubit A, qubit B, and qubit C. And suppose that my qubit A has a state alpha 0 plus beta 1 that I want to transfer to qubit C. This qubit B will just help me assist do this job. So the protocol is this. Let's start this qubit in 0 state, and let's start with this qubit in 0 state. So 0 and 0, and this is in a state that I want to teleport to this qubit. So the starting state is, let me call it some, so this is the starting state, 0, 0. So this is in qubit A, and this is in qubit B and C. So A, B, C. So if I write it explicitly, this becomes alpha 0, 0, A, B, C, beta 1, 0, 0. So this is the starting state, okay? So if I put this I here, so this multiplies with the first and the second state, so this is what you get. The trick is that this 0, 0 state, I do an entanglement of these two states and prepare a beta 0, 0 state. Okay, so my state over here was psi 0, 0, and my state over here now is psi beta 0, 0. Okay, so these are those two qubits that are other than psi. I just entangle them together and prepare them in beta 0, 0 state. Now the protocol is that I do a measurement in Bell basis of this and this qubit. But before that, let me rewrite this thing in another way. So this psi beta 0, 0 is the state alpha 0 plus beta 1, 1 over square root 2, 0, 0 plus 1, 1. So if I multiply them all, I get 1 over square root 2, alpha 0, 0, 0, alpha 0, 1, 1, beta 1, 0, 0. I have eliminated A, B, C, but you have to remember that the first is A, the second is B, and the third is C qubit, plus beta 1, 1, 1. So this is a state. And this actually can be rewritten in a certain way. I can write this state by adding and subtracting some terms like this. And I leave it to you to confirm that this can be done.
plus 0 1, alpha 1 plus beta 0 plus 1 0, alpha 0 minus beta 1 plus 1 1, alpha 1 minus. So just to see that this is equal to this, you see the first term alpha 0 0 0 is here. The second term beta 0 0 1 is not here, so I have added this term myself. But I have also subtracted this term beta 0 0 1. Beta 0 0 1. Let's see, where is beta 0 0 1? Zero zero alpha 0 plus beta 1. ये तो फर्स्ट वाली है, तो ये माइनस कहाँ पे किया? 1 0 1 and the last one is 1 1. Because I can just add something to it. 0 0 1 0 1. Okay, so let's see it again. ये है 1 1 0. या जो मैंने लिखा है वो सही नहीं लिखा. अच्छा, तो ये है हमारी पहली स्टेट. लेट्स सी. और ये हमारी है ये बीटा 0 0 स्टेट. ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1. ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, इसमें पहले तो आगे 0 0 0 ये है, और फिर चले इसका भी बाद में देखते हैं. इसके अंदर ये स्टेट है 0 1 1, तो 0 1 1. लेट्स, इसमें दूसरी स्टेट है 0 1 0. यहाँ पे नहीं है, तो क्या हमने कहीं सब्ट्रैक्ट किया 0 1 0? ये 1 0 1 है. I think there is trouble. So let me just work it out because I think this is wrong. जी नहीं, वो कंट्रोल नॉट जो भी है, ये सब कुछ करके ये बीटा 0 0 स्टेट है ना, ये आ गई. So let's work it out. So let's see what you know. Okay, so this and this. Let me write it again because I think I figured out. So ये बनेगी 0 0 plus 1 1, and this going here, and alpha 0 plus beta 1 like this.
And then the next state would be 0 1 के corresponding bell state कौन सी है? 0 1 के corresponding है 0 1 plus 1 0. 0 1 plus 1 0. Alpha 1 plus beta 0. And 1 0 के corresponding कौन सी state है? 0 नहीं 1 0 के corresponding 0 0 minus 1 0 0 minus 1 1 and this is alpha 0 minus beta 1 and then 1 1 के corresponding has 0 1 minus 1 0 0 1 minus 1 0 alpha 1 minus beta 0. Okay, so this state can be written like this, and let's now see that if everything is okay or not. So first term इसमें है 0 0 0 alpha, इसमें first term है 0 0 0 alpha. अब इसके अंदर second term कौन सी है? 0 0 1 beta के साथ, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है I have added the term myself. Let's see if there is any place else where this is being subtracted. 0 0 1 and beta. So this is 0 0 1 and beta with minus sign. So actually these are 4 terms, so I have added another 4 terms and subtracted another 4 terms. So basically what I did is that I rewrote this state in terms of the bell states, in bell basis basically. I'm expressing this state so that the first 2 qubits are expressed in terms of the bell basis, so the third qubit comes out to whatever it comes out. And you can check very easily that this is actually exactly equal to this. Now, if we look at this state, the state is like this. So this is a bell state. This is another bell state. This is another bell state. And this is another bell state. Which means that if I measure the first 2 qubits, then I would measure either this or this or this or this state in bell basis. So if we measure in bell basis, then this will give me 0 1, this will give me 0 0, this will give me 1 0, and this will give me 1 1. So if we perform a measurement in bell basis, Hadamard, and then we have 2 classical bits. Now, if we get 0 0 here, it means the third qubit has collapsed to this state. Okay, recall that if we have a superposition quantum state, when we measure some of the qubit, it collapses to whatever it does, but the whole state collapses to that thing. So if we measure 0 0 over here, it means the quantum state has collapsed to this one. So this has this state, this qubit, which is nothing but psi. So this state is nothing but psi. So it means that if I am getting 0 0 here, I'm getting psi here automatically. No, it is possible that I don't measure this state because any one of these can be selected with equal probability. If this 0 1 is measured, which means that the system collapsed to this state, and the third qubit had this state psi, this state. But this state is nothing but an X version of psi. If you apply X gate to psi, you get this state. So it means to recover psi, I have to do another X gate on this because I know that X square is identity. So it means our protocol should be such that if I get 0 1, and let's say this is the first qubit, I should be doing an X gate on this qubit. So let me, so if I get
0, 1. So X gate should be controlled by this qubit. So if it is 1, X gate will happen. If it is 0, this will not happen. Okay, so let's see about this thing. So if this 1, 0 is measured over here, it means our state is this. And this is nothing but Z operated on state psi, because the sign of this qubit is flipped. Which means that if I measure 1, 0, here 1, here 0, I should be applying Z gate to my qubit. So it means Z gate to the qubit comes, क्योंकि ये 1, 0 है, ये 0 तो ये तो apply नहीं होगा, so इसके ऊपर Z apply हो जाएगा. And let's see for the last one. If we measure 1, 1, I'm getting this state, and this state is nothing but ये 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, इधर माइनस साइन है. इसका मतलब है पहले इस पे Z गेट अप्लाई हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे पहले 1 था ना जो साई में, तो उसकी जगह साथ माइनस साइन आ गया, उसके बाद इसके ऊपर X गेट अप्लाई हुआ होगा. So it means if I measure 1, 1, my state and the third qubit has collapsed to XZ into psi. And to recover psi from this XZ, I will first have to perform X, and then we'll have to perform Z, because X square will give me 1, and then Z square will give me 1. So this will give me state psi. So state is coming from here. X will be performed first, Z will be performed later. So I will be getting state psi over here. So it means, and this thing, this part can be either, few micrometer, if we are talking about, let's say, a quantum computer, because the qubits can be few micrometer away, or this can be few miles away. If you want to send the state to somewhere, let's say at moon, then this part is happening classically. The part before this and the part before this is happening quantum mechanically. Okay, so let me repeat. So we are starting with this setup. We have a qubit in state psi, and we want to copy its state to another qubit. What we do, we pick another auxiliary qubit, we call it, because this is just helping us. Then we entangle them together, let's say in beta 00 state, and we have beta 00 here. Then we take one of the qubit, and jointly with another one, we do a measurement in Bell basis. And because of that, the joint state of 3 qubits collapses to either psi or X psi or Z psi or X Z psi. And based on the measurement outcome, we do something to this qubit, and then that state is copied. So you see one thing, but actually several things. Number one, that we did not measure this state individually. We measure the correlation of this state with another state, because this measurement in Bell basis is just measuring the correlation. And then when we have copied this state over there, this state has destroyed. Remember, after measurement, जो ये qubit है, ये collapse हो चुकी है, या तो 0 को या 1 को. Okay, so there's no copying, only transportation of the state. The state over here is lost, and now we have our state psi on this qubit. So here sort of we can again think this protocol in several other forms. By the way, you can start from these 2 qubits in 0, 1 and get this beta 0, 1 state. And again, you can do the same procedure. The only difference is that here operations kuch aur ho jayenge. Yeah, you can start them in 1, 1 and यहाँ पे operations kuch aur ho jayenge. I'll give you a problem in homework जिस पे आप किसी और state के लिए work out करेंगे. क्यों सामा? मैं इस तरह की दो एक और होती है 400 फीट और ये सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और उसके आखिर में इस तरह एक्सेस लग जाता, तो जो साइज स्टेट है वो 2 बार नहीं बन जाती, थर्ड में भी और फिफ्थ में भी. तो फिफ्थ कौन सी? मतलब ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें कॉपी भी नीचे बना दो ना, फिर रेप्लिका बना दो नीचे, ये भी हो रहा है नीचे प्रोसेस, और जो साइज स्टेट के अलावा सारा कॉपी हो नीचे.
ये जो प्रोसेस है नहीं, मैं कैसे, आप कह रहे हैं कि मैं ये लेफ्ट से 2 क्यूबिट और लेता हूँ, फोर्थ फिफ्थ वन, और उनको भी आपस में एंटेंगल कर लेता हूँ, तो उसकी फिर मैं इसके साथ मेजरमेंट कैसे करूंगा? क्योंकि या तो इसकी होगी या उसकी होगी, तो उसके बाद तो क्यूबिट कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इन दो में से एक जो है ना उसके साथ मिलके तो मेजरमेंट भी तो हम कर रहे हैं ना। असल में चाहे तो जो फिफ्थ क्यूबिट है ना, जिसका थर्ड क्यूबिट आपने जिस स्टेट में पहुंचा, फिफ्थ क्यूबिट को किसी तरह उस स्टेट में पहुंचा दो, तो उसके आगे तो जो नहीं, किस तरह से पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि जो थर्ड क्यूबिट है उसके ऊपर जो सारा काम हुआ है वो तो मेजरमेंट से पहले सारा नहीं, लेकिन वो सिर्फ थर्ड क्यूबिट पे नहीं हुआ, याद रखें हमने पहले थर्ड क्यूबिट को सेकंड के साथ एंटेंगल किया हुआ है, और सेकंड को फर्स्ट के साथ एक किस्म का ये भी एंटेंगलिंग ऑपरेशन है, बस रिवर्स एंटेंगलिंग है, उसके साथ एंटेंगल करके उसको मेजर किया। तो अगर हम इसको कर लेंगे, तो अगर आप 2 पेयर और लेते हैं तो उसको हम किसके साथ फिर एंटेंगल करके मेजर करेंगे? समझ रहे हैं ना बात? मैं, अगर तो आप ये कहते हैं कि मैं वैसे ही एक थर्ड लेके फिफ्थ लेके आ जाऊं और उस पर ये एक्स और जी गेट, तो उसको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अभी इसके साथ एंटेंगल तो नहीं है। ओके, सो कॉपिंग डजंट वर्क perfectly. We can have approximate copying, but not perfect copying. Okay, कोई सवाल इस प्रोसेस के बारे में? Let me give you another view of this thing. So suppose we now have Alice again, and Bob again, and then Charlie. And suppose Charlie prepared a beta 00 state, 2 qubits in this entangled state, and gives one to Alice and one to Bob. And other than this EBIT, suppose Alice has another qubit with state psi, and now she wants to send the state of this qubit to Bob somewhere else. How can she use these, entangled bits or these entanglement resources that they already share to communicate this state psi to Bob? What she can do, कि जो उसको ईबिट मिली हुई है चार्ली से और जो स्टेट वो भेजना चाहती है, शी विल डू देयर जॉइंट मेजरमेंट इन बेल बेसिस, राइट? वो जो वाला पार्ट है, यू सी नॉट, यू डू हेड मार्ट, यू डू मेजरमेंट, और यहां से जो दोस्त को क्लासिकल बिट्स मिली हैं वो फिर एक क्लासिकल चैनल से उनको बॉब की तरफ भेजती है। एंड व्हेन बॉब, then based on these two information, he will do something to that his state is now inside state. अगर इसको 0 0 मिलता है तो he will not do anything to his EBIT, he will know कि जो वहां पे स्टेट्स आई थी वही ये स्टेट्स आई। अगर उसको 0 1 मिलता है he will do x, अगर 1 0 मिलता है z, अगर 1 1 मिलता है he will first do x and first second time z to this qubit, and that will be converted to the states. Can you believe it? How mysterious it is. This psi, can be one of infinitely possible states, any state on the block. And by only sending one of the 4 signals, you can convert this EBIT into exactly this state psi. Of course, इसकी अपनी state destroy हो जाएगी, ये नहीं होगा कि इसके पास psi भी रहेगी उसके भी psi होगा, क्योंकि जब वो measurement करेगा, the state will be collapsed by the 0 or 1. But still, this quantum state has been sent to another place by sending only 2 classical bits, all due to entanglement. क्योंकि दोनों के पास ऑलरेडी एक एंटेंगल्ड बिट थी जिसकी मदद से उन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन यहां से वहां पे ट्रांसफॉर्म कर दी है। क्योंकि हमने साई को क्लोन तो नहीं किया ना, जब ये साई को इसके साथ मिला के मेजर करेंगे तो ये कोलैप्स कर देगी या 0 या 1 को। ओके ओके, सो let's now see what are its features. Okay, let me first invite you to give your comments. क्यों वाली रहा?
What do you think? I mean, what is striking for you about this teleportation thing? Okay. So also what is the striking feature of teleportation for you? Okay, so मेरे लिए तो वही है जो मैंने सबसे पहले बताई है कि एक साई स्टेट जिसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, आप उसको एक से दूसरे का भेज सकते हैं विद ओनली फाइनाइट सेट ऑफ मैसेजेस। 2 क्लासिकल बिट्स में टोटल 4 मैसेजेस आप भेज सकते हैं। So with those 4 messages, you can convey the information of a point on a block sphere to an someplace else. Classically करके दिखाएं। Of course, there is a catch, and catch ये है कि you haven't actually read the state. You can't communicate too many messages, but you can communicate the state. अच्छा, इस पे ना बाज़ लोग एक बात से कंफ्यूज होते हैं, उसामा एक मिनट, और वो ये है कि क्या इसकी मदद से हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते? मसलन ये हमारे पास जब हमने इनको मेजर किया आपस में, तो हमारी जो स्टेट है हमने मेजर किया, कुछ ये रिजल्ट आया, लेकिन वहां से हमने देखा है कि जो बाप के पास क्यूबिट है ना, ये वाली, वो जो थर्ड वाली है, as soon as you measure it here, this collapses, right? इस क्यूबिट की 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, and it collapses to one of them instantly. Can't we use it to do communication instantly wherever Bob is? क्यों नहीं? फर्ज करें अभी क्लासिकल बेसिस हमने भेजी भी नहीं है, यहाँ तो वहां तो as soon as we measured our first 2 qubits, the third qubit also collapsed. Okay, but so आप दोनों सही कह रहे हैं, यानी कि हम नहीं कर सकते, but the argument is more subtle than that. और वो ये है कि वो जो collapse है बॉब के लिए वो नोटिसेबल नहीं है। बॉब इस मेजरमेंट से पहले या बाद में जब भी मेजर करता है, उसको अपनी ये जो ईबिट है वो रैंडम स्टेट में इजीली एक्चुअली चेक। आप जो ये स्टेट है ना, ये साइज स्टेट, इसका बनाएं ये डेंसिटी मैट्रिक्स बनाएं, एंड देन यू ट्रेस आउट ओवर ए बी so that you only have density matrix for Bob's qubit. So you will see कि बेशक शुरू में तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बॉब के पास वो जो बीटा 002 स्टेट है, तो उसको वैसे अगर एक को ट्रेस करते हैं दूसरा आइडेंटिटी बनती है विद हाफ, एंड इवन आफ्टर मेजरमेंट यू कैन स्टिल सी कि दिस इज द स्टेट दैट बॉब हैज। सो बॉब के पास मेजरमेंट से पहले और मेजरमेंट के बाद सेम स्टेट है, which is a random combination of 0 and 1 state. So there's no instant communication. This is called no signaling theorem. That measurement on part of the system does not send any signal to the other part of the system. Doesn't matter with speed less than or more than light, unless you send some other information. ठीक है, नो सिग्नलिंग ये भी नहीं है कि आप कहें कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कम्युनिकेशन है, बल्कि थ्योरम ये है यू कैन कम्युनिकेट विद स्पीड लेस देन और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट with just by performing measurement on part of the system. You can't send any information to the other part of the system by just measuring this subpart or subsystem. And
वी कैन इजीली चेक। जैसे आप कोई भी एंटेंगल स्टेट ले लें, उसका आप पार्शियल ट्रेस लेके दोनों सिस्टम का अलग अलग डेंसिटी मैट्रिक्स लें, तो यू विल सी दैट दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर द सेम बिफोर एंड आफ्टर द मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल इस केस में if I want to actually write the density matrix after measurement, what will I get? Before measurement तो आप देख रहे हैं ना, before measurement you can quickly see that this is the density matrix with Bob, क्योंकि वो जो बीटा 00 states हैं उनमें से आप B को trace out कर लें तो जो C है वो ये state बनती है। But let's see what happens after measurement. After measurement स्टेट क्या है आपके पास, जो तीनों क्यूबिट की जाइंट स्टेट है ना, वो असल में ये बनती है। इट्स स्टेट 00 साई या 01 एक्स साई या 10 z psi या 11 x z psi, and they're all with probability 1/4. Okay, ये है आफ्टर मेजरमेंट either this or this or this or this, तीनों क्यूबिट के। और इसका डेंसिटी मैट्रिक्स जो है वी कैन इजीली राइट 1/4, इसका बन जाएगा और ये चारों का लिखें। एंड देन व्हाट यू डू, यू टेक अ ट्रेस ओवर दिस ABC एंड यू विल सी कि इसका जो व्हेन यू टेक आउट trace of this part, this will still be of 0, 0. So before measurement and after measurement, the density matrix of qubit with Bob is the same. So अगर Bob Alex की measurement आने से पहले अपनी qubit को measure करना चाहे, so he will not get any information. He wouldn't know कि Alice ने क्या measure किया। So measuring in a part of a system does collapse the wave function of the overall system, but it doesn't convey any information, it doesn't send any signal to the other part of the system. So this no signaling theorem and no cloning theorem actually helps us prepare a secure communication protocol, but no signaling theorem essentially puts limits on quantum mechanical communication system, that you can't send too much information without paying any cost. Teleportation से हमने बहुत सारी information 2 bits से send करके, तो मेरा सवाल ये था कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि information send की, हमने जो एक ऐसी state जो कि infinite possibility जिसकी है उसको हमने send कर दी। क्या ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 3 नंबर यानी थीटा फाई और अगर हम स्टेट में तो आर की वैल्यू सेट करके, मतलब इनफिनिट क्या है, थीटा फाई और आर 3 वैल्यूज ही है ना? नहीं, उनकी तीनों की वैल्यूज तो इनफिनिट ही है ना। नहीं मतलब लेट्स से 3 रियल नंबर्स मैं सेट कर रहा हूं ना। हाँ ठीक है, लेकिन आप फिर अज्यूम कर रहे हैं कि आप कोई अगर स्टेट साइज दी जाए एक क्यूबिट, तो आप वो आर थीटा फाई फाइंड कर सकते हैं। यू कैंट, क्योंकि आप एक ही मेजरमेंट, अगर आपको एक क्यूबिट दिए तो आप एक ही मेजरमेंट कर सकते हैं, और या आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, उससे तो आपको आर थीटा फाई का पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात कि आपकी क्यूबिट स्टेट तो ये है ना, लेट्स से दिस इज सम स्टेट। मसला ये है कि अगर आपके पास एक क्यूबिट है तो एज सून एज यू मेजर इट यू आइदर गेट 0 और 1, तो इसका थीटा क्या है, इसका फाई क्या है, इट्स ऑल गॉन। अगर लेट्स से क्लासिकली कुछ स्क्वायर होता और मैंने इसकी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती तो मैं 3 नंबर ही सेंड कर देता। नहीं, फिर भी वो 3 नंबर, अगर आप फिर आपने ये सोचना होगा कि आप परसीएन क्या लेना चाहते हैं, क्या आप थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू सेंड वन ऑफ द 360 डिग्री पॉसिबिलिटीज, तो आपको उतनी बिट्स में उसको इनकोड करना पड़ेगा। अगर आप अपनी परसीएन बढ़ाना चाहते हैं कि 1.111012 3 भेजें, तो आपको you will have sent many more bits, so it's not just 3 numbers,
को किस तरह से भेजना तो है ना। हाँ, तो कम डाउन टू द सेम थिंग, जितनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहेंगे कॉस्ट उसी तरह से लीनियरली बढ़ती जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये मैं कहना चाह रहा था कि जब आप 2 क्यूबिट्स को मेजर करते हैं ना, तो हमारी जो जॉइंट स्टेट है 3 क्यूबिट्स की, वो किसी एक सिंगल टर्म को कोलैप्स कर जाती है, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस मेजरमेंट के बाद जो बॉब के पास क्यूबिट नंबर सी है, उसको अगर बॉब मेजर करके कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो निकाल सकता है कि नहीं? क्या उसको पता चलेगा कि मेजरमेंट से कौन सा रिजल्ट आया? तो जवाब यह है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आप पोस्ट मेजरमेंट डेंसिटी ऑपरेटर लिखें तीनों सिस्टम का कंबाइन, एंड देन यू फाइंड द डेंसिटी ऑपरेटर फॉर बॉब, इट इज स्टिल द सेम एज इट वाज बिफोर द मेजरमेंट। ये आप कैसे, तो आप सारा करेंगे तो फिर पता चलेगा ना आपको। तो रॉ सी ये देखें और ये एक ही है, हाफ। हाँ, अगर लेट्स से 0 0 पे ब्लैक होल हो अल्फा 0 प्लस बीटा 1 ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। उसके करस्पॉन्डिंग, हाँ तो ठीक नहीं, वो देखे ना 0 0 को होगा तो ये स्टेट साई मैंने लिखी है, ठीक है। एंड देन दूसरे की तो आप ये, इफ यू डू ऑल द मैथ यू विल सी दैट दिस इज व्हाट इट कम्स आउट। अल्फा 0 प्लस बीटा 1, हम्म, तो अकॉर्डिंग टू दैट अल्फा स्क्वायर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में 0। नहीं लेकिन आपको तो नहीं पता कि वो है, असल में तो डेंसिटी ऑपरेटर में आप सारे लिखेंगे ना, सिर्फ ये तो नहीं लिखेंगे। नहीं, अगर तो आपको पता चल गया कि आपने मेजरमेंट की है और उस स्टेट को कोलैप्स किया तो फिर तो बात खत्म, फिर तो आपको पता चल गया। आप भाब है, आपको नहीं पता एलिस ने मेजरमेंट की है या नहीं की, अगर की है तो क्या है। तो आपके लिए तो चारों पॉसिबिलिटीज है ना। तो फॉर यू के एलिस ने जब मेजरमेंट की, या तो स्टेट ये हो गई है या ये हो गई है या ये, और चारों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ है, ठीक है। तो आपके लिए तो डेंसिटी मैट्रिक्स ये है। अगर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट की और सिर्फ ये आया तो जीरो, तो फिर तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बाप को एलिस की मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन का पता नहीं है तो फिर, हाँ नहीं, बिफोर, इवन आफ्टर मेजरमेंट, बट बिफोर बाप गेट्स एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलिस, क्योंकि अगर तो बाप को एलिस की इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है कि मेजरमेंट होगा 0 0 मिला है, तो फिर तो उसको पता चल गया कि ये स्टेट अल्फा 0 भी, तो 0 की प्रोबेबिलिटी अल्फा मॉड स्क्वायर होगी। Okay, so no signaling theorem is that without any information going from here to here, just measurement in itself doesn't convey any signal to Bob. Perfect. क्योंकि ये इनिशियली a very common fallacy of thinking कि आपकी तीनों क्यूबिट की सुपरपोजिशन स्टेट इतनी बड़ी है, when Alice Meyer's state collapses to this one, so perhaps this can be used to convey information to Bob without sending anything. But that's not we see is what is happening. Okay. I don't know कि ये चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, you know, making something clear about this. But this is something fascinating. अगर आपको समझ नहीं भी आई, read the book जो नेल्सन चुआंग की है, उसकी बुक थोड़ी सी लेकिन कंडेंस है बहुत। वो जैसे सारी ये बातें हैं वो सिर्फ 2 सेंटेंसेस में क्या क्या आगे निकल जाए, assuming के you will pay attention to every single word that he has written and think over it and then you will move forward. तो उसकी बजाय अगर आप जो उसके नोट्स हैं जॉन प्रेस्कल के, वो ज्यादा डिटेल्ड है। he you know takes all the time in the world to say things again and again and very explicitly without assuming anything. So you can see this discussion over there as well. लेकिन उसका थोड़ा सा मसला ये है कि वो